रीडिंग नहीं होगी। अभी से है ना। मोशनलेस कौन है अभी से, ये तो। ओके, फर्स्ट जस्ट टेल द आंसर। आई लेट द आंसर, सब लोग नोट कर। गया है।
So these are the answers to first 4 questions. Okay. अब देखो answer देखो. Okay. Okay, sir, let us discuss these questions. First of all, good evening, everyone. Good evening, Vaishu. How are Good you? evening, sir. Yes, how are you? Everything okay? Thank you, reply नहीं है. सब ठीक है तो? Yes. जी, आप लोगों के लिए एक छोटा सा न्यूज़ है, तो आपको पता होगा. The syllabus for 2020 and 2021 means and needs has been reduced. ठीक है. जो आपका मेंस और नीट एग्जाम होगा, उसमें सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, बिकॉज आप लोग का थोड़ा कम टाइम है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. तो रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस थोड़ा रिड्यूस हो गया. आपको पता है कौन सा एग्जैक्टली क्या पोर्शन काटा है? एनीवन नोस? यस, अविशी अविशी. No, sir. आपको पता है अविशी? ठीक है. नहीं सर. ओके. तो द सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड. उससे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज पता नहीं, बिकॉज अगर इजी टॉपिक्स रिड्यूस किए तो डिसएडवांटेज है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स. बट अगर टफ टॉपिक रिड्यूस किए तो ठीक है. एनीवेज, हम तो सब पढ़ेंगे जब तक तो सिलेबस नहीं करते तो पढ़ेंगे. तो ये पहला चीज बताना था. चलो, so let's start discussion. How many questions could you do? Both of them. कितने questions है sir? Yes, Anshu. Yes, Aishi. How many questions? Sir, I tried 4. Okay, 4 times. Okay, let us discuss them one by one. I'm just turning my video. Screen पे focus करो. So first question. In this question, it is given that there is a cylinder. Imagine a cylinder. So the radius is r. Length is given as l. So we have to find out. It is placed in uniform electric field. So first is that its axis is parallel to electric field. That means this is the axis of the cylinder. So this axis is parallel to the electric field. So now they have asked us to find out net flux through this. So we know by definition of flux, flux equals to integral E dot ds. This is the definition of flux.
Now, if you carefully observe, this cylinder has different surfaces. You can name also. This is 1, 2, 3. So this cylinder can be divided into 3 different surfaces. 1, 2, and 3. So the net flux can be written as like this. Okay. So there is a net flux passing through the cylinder. Okay. So now, how to go ahead? Basically, E dot ds में जो हमारा ds होता है, it is its direction is along the outward normal. So for this surface, the outward normal is like this. Then for this surface one, the outward normal is like this. And for surface three, the outward normal is like this. Towards the- So any area can have two normals, but we are choosing the outward normal. The normal which is pointing outward. So then solving this, we can get phi one is okay. One more thing. Let me know the electric field also. So that it becomes. So at this point, the electric field is like this. At this point, also the electric field is pointing towards the right. Here, the electric field is like this along the arm. Here, the electric field is opposite. So thus we can write phi one. This can be written as E into S into cos of 90 degrees because there is both of them perpendicular to each other. Yes. Then you can write phi 2 as E into S into cos of 0. Thus you can write phi 3 as E into S3 into cos of 180. Okay. So now this value is 0. Cos 90 is 0. Is 0. Plus you can write this as E into R square into pi R square. This is minus E into pi R. So thus we get the net flux through the cylinder. Is this clear to everyone? अच्छे समझ में आ गया दोनों को? Yes, sir. This was the first. This was for the first one. Now in the B part, the situation is something like this. That we have a cylinder. The electric field is like this. Electric field is pointing towards right. So now, again, net electric flux can be written as flux due to surface 1 to surface 2. So in this can be written as phi 1 plus phi 2 plus phi. So again, we can draw the normals, outward normals. It's always a good habit to draw them. So for surface 1, the outward normal will be upward. For surface 3, it will be downward. For this,
at this point it will be right towards the right, and at this point it will be towards the left. Okay. So you see, at this point the electric field is like this. At the bottom side, the electric field is towards it. So value of phi1 will be how much? It will be 0. Because normal and electric field are perpendicular to each other. Then value of phi2 will be, phi3 will be, this will also be 0. Because again normal to the area and electric field are perpendicular to each other. So what is the electric field through 2? That we need to find out. So if we take the top view of this cylinder, so it will be a cylinder like this. Okay. And, this is the direction of electric field. So we need to find out the net flux through this surface area. So the problem here is that the normal at all the points is different. At this point, the normal is towards the left. At this point, the normal is towards the right. Here it will be upward. Here it will be downward. Here it will be right. So this outward normal is continuously changing for the circular surface. So we need to find out a way to find out the phi. So phi2 can be written as integral E. So let us consider a small section of this. This is the origin. Let us consider a small section. This angle is theta and this small angle is theta. Okay. So let us try to find out flux for this small section, and then we'll try to find out the flux for entire object. Entire. So at this point, the normal will be like this, outward normal, and the electric field will be towards the right. Okay. And this angle is again. So if you write this flux due to this small part, if you write a flux due to this small part, it should be d phi. It will be E ds into cos theta. So this is E into small. What is the area of this? This will be L R d into cos theta. So how is this L into R? Is it, yeah, समझ में ना दोनों. R theta is the length of this arc, and L is the length of the entire cylinder. दोनों को समझ में आ गया कैसे होता है? ठीक है. Yes, sir. This is a small area ds into cos theta. So the net electric flux will be integral of secant, that is E L R integral cos theta.
theta is varying from how much? Varying from 0 to 2 pi. So this turns out to be 0. That means the value here also will be 0. We get the net flux through the surface as 0. Is it clear to both of you? Any doubt in this? अच्छे से समझ आ गया? Yes? सर तो लेकिन वो जो स्पेरिकल सरफेस वाला था उसमें भी फिर 0 होगा। वो आगे वाला क्वेश्चन का बोल रहे थे। हाँ मतलब आते हैं ये क्लियर है ना पहले? This question number 1. Basically, I'm telling you the approach how to get this answer. So ये हो गया हमारा first. Now second part. Second question. Sorry. Second question में क्या दिया? There is a cube with its three axes. Let me draw this carefully. This is x, y, z. And let us say I have the cube. This is again an imaginary surface. Imaginary cube. So I'm trying to draw it. So let me just name this so that we can solve it easily. So I'm just naming the cube. Solve it. Now again you have to find out the electric flux. So in the question it will be the electric field is pointing like this towards the right. So I can write the net flux to this and flux through all surfaces. This can be written as phi A B C D plus phi G H F A plus phi. That's all like this. So the net flux can be written as sum of all the different fluxes. So what is phi A B C D? So let us try to calculate phi A B C D. For that we need two things. We need the direction of normal. Direction of normal is like this. For this surface, normal is like this. For this surface, normal is like this. For this surface, normal is like this. For the other one, normal is like this. And for the inner surface, normal is like pointing inward. These are the outer normals for all the six surfaces. Obviously. Now let me show the electric field also, so that things become very clear. So electric field for this surface, it is here. For this surface it is along the normal. For this surface it is again perpendicular. For this surface again, this surface. For this surface. Okay. So is the diagram clear to all? yes sir। Okay, good. So now phi ABC. Let us try to do phi ABC. This will be our 0.
because the electric field are normal, they're perpendicular to each other. So the dot product is 0. Similarly, phi is 0. See how much? Again, this is 0. Because normal and electric field are perpendicular to each other. Then phi is 0. इसका वैल्यू कितना? This will be E into a square into cos of 180. Because the electric field here and the normal are perpendicular, they are anti-parallel to each other. Electric field is pointing towards positive X and normal is pointing towards negative X. This is minus E. Similarly, phi CDPH. What is the value for this? This will be plus EH. Because normal and electric field are parallel to each other. और कौन सा बचेगा? Phi CDEH. This is 0. This will be equal to phi BC. So the net flux here can be written as sum of all these fluxes. So basically 0 0 है सब जगह पे बस एक minus ES पे रहेगा plus ES. So again we are getting the net flux equals to okay. Is this clear to one? Follow me. Sir, I have a question that if the electric field is originating from the origin of the Cartesian plane, then what will be the fluxes? Electric field is originating from The origin of the Cartesian plane means that. what is the flux in that case? ये क्या है point charge है क्या है? How is the electric field? Is it like this parallel like that? No, it is diagonal to the whole cube. Diagonal में? वही point charge क्या है? नहीं पॉइंट चार्ज नहीं, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल था अलोंग द एक्स एक्सिस, वो अगर डायगोनली हो तो क्या होगा? मतलब ये जो हर एक फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा फिर? ओह, गुड क्वेश्चन. उसका भी 0 होगा. कैसे हम बताते तुमने? ठीक है, ठीक है, 0 उसका भी 0. यस. तो अभी तो आप कर सकते हैं. क्वेश्चन भी करना है क्या? क्वेश्चन भी तो इजी लग रहा है. Why not you do question 3? Follow me, Ayushi Mukita. What do you say? Simple. I'll just do one part. बाकी आप कर. So they have asked us flux to the right face if the electric field is as follows. You are again. Again, it is a cube. ये फेस से कितना हमारा फ्लक्स है पूछेगा. फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे दिया हुआ है 6 pi cap न्यूटन का कूलम and flux is given as E square into I cap meters.
ऐसे नहीं लिखते ना, flux will be a square into I cap because n is pointing toward I cap and magnitude is a. Then you can find out flux. Phi will be E dot S. 6 a square. So एक बार इसमें करने का. Then you can do for BM. Okay. Part D थोड़ा interesting है. जो हमारा part D है. इसमें जो हमारा flux है, net flux. Sorry, जो हमारा net area है, वो कितना है? They have asked us to find out total flux to the cube for each of these cubes. Total flux के लिए हमको total area निकालना पड़ेगा. Total area कैसे लिख सकते हैं? A square into I cap. ये फेस का A square into I cap होगा. फिर इसके opposite फेस का क्या होगा? ये वाला फेस. इसका पीछे के डायरेक्शन में नाम है. तो उसका होगा माइनस A square into I cap. सीधे ऊपर वाले फेस का होगा A square into K cap. नीचे वाले फेस का माइनस A square into K cap. सीधे डी वाला फेस का प्लस A square into K cap. और उसके opposite फेस का माइनस A square into K cap. That means हमारा नेट एरिया है जिसके थ्रू फ्लक्स निकालने में जीरो. That means what जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, this will be zero for all cases. All the three cases. ठीक है. तो क्लियर है इसमें कोई डाउट किसी को? और इसकी अलग No, sir. तो ये वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 थोड़ा कैलकुलेशन. क्वेश्चन 4. Non-uniform electric field is given by this. It's PSL Gaussian equation in the figure. What is the electric flux through the right face of this? तो ये वाला करते हैं. Then you can try question 5 on your own. खुद से कर सकते हैं. This is X, Y. एक क्यूब दिया हुआ है, x equal to 1 है, this is x equal to 3. Now in the question the electric field is given as 3x I cap plus 4g. इसका मतलब क्या है? Electric field equals to 3x I cap plus 4g. What does this mean exactly? Yes. Basically our electric field है, that is varying with the x coordinate. That means at x equals to 0, electric field equals to 4g cap. X equal to 1, electric field is 3i cap plus 4g cap. Then at x equal to 3, electric field will be 9i cap plus 4g cap. So with x coordinate, the electric field is varying. Okay. So then how to solve this question? ये question आता है. How to solve it? Can anyone tell? Follow me, Mukita. आप लोग try कर सकते. Sir, hello. हाँ बोलिए. Sir, at first we have to take x equals to 3.
For the first phase means the phase which is marked 1. Okay. Yes. Then it will come 9 I cap plus 4 j cap, Okay. and the area vector will be 4 I cap. ठीक है. Then if we multiply, then I cap that component will become 0, and 4 into 4 becomes 16 k cap Okay. for the first phase. Okay. Then other. बाकी हेलो सर. हाँ बोलिए सर. और अदर सर सब ठीक है. या बाकी हाँ. सेकंड फेस के लिए वो जो x है उधर मैंने 1 लिया, मतलब x इक्वल्स टू जो 1 है वो उधर पुट किया है फॉर सेकंड फेस, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 3 I cap plus 4 j cap which will be multiplied by 4 j cap, मीन्स जो एरिया वेक्टर है वो 4 j cap हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करने पर वो 12 k cap हो जाएगा. सिमिलरली फॉर द थर्ड फेस मैंने फिर से वो जो x है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मैं 3 लिया, तो 9 I cap plus 4 j cap हुआ, फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो वो 36 j cap हो जा रहा है, और जो j cap था वो 0 हो जा रहा है. सी वाले में थर्ड वाला थोड़ा गड़बड़ लगा. हाँ? और थर्ड तो सही था आपका. क्या गलत, कुछ गलत है सर? थर्ड वाले में थोड़ा लग रहा है गड़बड़. लेट्स सी. ओके. तो अच्छा टाइप था. तो फर्स्ट फेस के लिए नॉर्मल ऐसे होगा, सेकंड फेस के लिए नॉर्मल ऐसे होगा, थर्ड फेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा. So net electric flux will be phi 1 plus phi 2 plus phi 2. Okay. So phi 1 will be even into S1 into cos 0. Yeah, इससे पूरा फॉर्मूला लिखना है. This will be x equal to 3 है. One first phase पे x equal to 3. That is 9 9 के plus 4 के dot जो one surface S1 है that can be written as 2 square into I. This is the area of first phase. 2 square की क्यूब का साइड 2 है. सर मैंने भी ऐसे ही किया है. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. phi 1 सही है. तो फॉर फर्स्ट फेज इट इज द, ये हमारा फ्लक्स होगा. फिर थर्ड फेज के लिए हम लिख सकते हैं प्लस उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा x इक्वल टू 1 दैट इज 3 I कैप प्लस 4 j कैप इनटू इसका एरिया कितना होगा, दिस विल बी माइनस 2 स्क्वायर इनटू. व्हाई माइनस? बिकॉज़ the area vector is pointing towards the negative x direction. Okay. तो ना अच्छा इन्होंने सम नहीं पूछा है क्या? This is phi 1 phi 2. ये समझ में आ गया सबको? phi 1 phi 2 कैसे निकलते हैं? The electric field at that area and into multiplied by the area. This turns out to be 36. This will be minus 12. Okay. And phi 3. Phi 3 कैसे निकलना? तो जो हमारा थर्ड सरफेस है इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 I कैप प्लस 4 j तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3 पे 9 I कैप प्लस 4 j and this electric field is continuously varying with x. जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वैल्यू डालना होता है E डॉट ds में, that is also variable है ना.
we can write it here like integral E dot dx. Okay. Now we have to see the elements. The element data. So let us consider an element here. This element is at distance x and its length is d or thickness is d. So now we'll try to see the electric field, electric flux to this small element. So वो होगा हमारा integral 3x I cap plus 4y cap dot ds. ds कितना होगा? This will be length into breadth dx into jk. क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में नॉर्मल we are taking jk. So now we can solve this. This is I cap I dot j 0 will be 4a into 7 is 4a j cap into integral 4a. So now what should be the value of x? It should vary from 1 to 3 with 4a into 2 8 into 0. Okay. So here was the trick. The trick was that electric field is varying continuously. तो हर strip पे अलग अलग electric field होता है. So we have to take it electric flux due to this small element, then electric flux due to the next element, the electric flux due to the next element, and then add all of them. That Sir, is I have a doubt that why you are taking as a differential component in that third phase and then approaching the problem. basically it is like this. Phi 1 we write as integral E1 dot d. Right. So in this case it will be E1 ds into cos 0. Right. Now we are taking E1 as E1 is given as 9 I cap plus 4 j cap because E1 is constant. That is why we can take it out of the integral. E1 into integral ds. This comes out to be a. This is how we get E1 into a square. Similarly, phi 2 also we get this is integral E2 dot ds. So again here E2 is constant. That is why we can take out E2. And this again is minus I क्योंकि opposite direction में. Right. Same procedure हमको इसके लिए भी करना पड़ेगा third के लिए. We can directly write here like this because E1 and E2 are constant. Phi 3 में E is not constant over the entire surface. That means यहाँ पे कुछ electric field अलग है. यहाँ पे 3I cap है plus 4J. यहाँ पे electric field अलग है 9I cap plus 4J. इस पॉइंट में कुछ electric field होगा. इस पॉइंट पे कुछ होगा. तो अलग अलग x के वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग. तो जो फ्लक्स है इतने एरिया से और जो फ्लक्स है इतने एरिया से दोनों अलग अलग होंगे. दैट इज उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इसके लिए डिफाइन करेंगे, इसके लिए डिफाइन करेंगे, अंदर सबको ऐड करेंगे. ठीक है सर ठीक है सर समझ. This is how we get the answer. So I think इतना ही डिस्कस करते हैं. You all can try the remaining questions 5, 6, 7. Yeah. Because I have taught all this, so आप भी attempt कर सकते हैं. And then we'll discuss it again. Okay. ठीक है सब लोग को. Yes, Oishi, Mukita, follow me. ठीक है सर. Yes, sir. Sir, are you doing partial differentiation here
in that vector part. कहाँ पर से देखते नहीं कहाँ पे गया कौन सा पार्ट वो जो मतलब जो फाइनल मतलब एफ्लक्स 3 में जो इंटीग्रेशन किया आप। इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएशन हाँ वो ओह सॉरी 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 कुछ पार्शियल अगर कुछ नहीं ओके ये ओके मुकेता फॉलो मी आप लोग तो शांत है पूरा क्लास समझ में आया Yes, sir. ठीक है तो अभी बाकी बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट ओके सर वो क्या ADX I कैप लिए या J कैप लिए? ये वाला हाँ हाँ ये क्या है ना बिकॉज़ नॉर्मल इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स वाइड सर देन J कैप होने से तो वो मतलब फिर 0 हो जाएगा तो नहीं जीरो क्यों होगा अच्छा एक मिनट J कैप तो 0 हो जाएगा। अरे डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है ना जेकैप डॉट जेकैप कितना ओह सॉरी सॉरी अरे ये पढ़ाना पड़ेगा क्या ठीक है यहाँ पे जेकैप नहीं होगा सर ये जेकैप डॉट जेकैप 1 हो जाएगा फ्लक्स में डायरेक्शन नहीं होता ओके ठीक है तो आई थिंक कैन एंड द क्लास हाउ द क्लास टुडे बहुत कंसेप्चुअल था क्या यस मुकिता पहले कुछ बच्चे सही में सो जाते होंगे पता नहीं ठीक हो ठीक तो मैसेज कर कभी से बोले कंटिन्यू करो बट आप लोगों ने खुद से ट्राई करने के तो अच्छा है क्वेश्चन नंबर 5 6 7 क्वेश्चन नंबर 8 आपने ऑटो ट्राई कर लिया मुझसे यस आप लोग रिवेनिंग ऑन यस सर वो रेस्ट क्वेश्चंस भी किए हैं। पूरा कर लिया हाँ सर पास ठीक है गिव द आंसर्स अब आंसर दे दीजिए अब आंसर चेक कीजिए लेट अदर्स ट्राई और आपको हो गया तो हम आपको और क्वेश्चन देंगे ठीक है तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास ओके शांत हो गए Sir, पिलर 1 का पार्ट बी और एक बार दिखाइए। आई जस्ट शेयर द नोट्स आपको पूरा नोट्स हम भेज देते हैं व्हाट्सएप ठीक है आई शेयर द नोट्स डोंट वरी अभी मैं क्लास में ही आपको ग्रुप पे डालूंगा ठीक तो तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू आयुषी Thank you, sir. Sir, we'll discuss the rest of the questions next class. या तो आप अभी 8 बजे तक कर सकते हो जो बचे Okay, सर sir. व्हेन विल बी द नेक्स्ट क्लास? सैटरडे सैटरडे ओ आज और होगा नहीं। अभी के देखते हैं ठीक है थैंक यू थैंक यू I'm ending the meeting. ओके सर।